National Ramayana Mela. This is the day, now is the time. We are so proud and blessed to welcome all of you to this auspicious day, ladies and gentlemen. We are here at the inaugural session of the 7th edition of India International Ramayana Mela. It's a beautiful day, and having all of you here with us makes this day even more beautiful, wonderful. And we have been joined by our chief guest for the day, Srimati Meenakshi Lekhi, Minister of State for External Affairs and Culture. We've also been joined by Shri Kumar Tuhin, DG ICCR, and all the ambassadors and high commissioners. We would like to extend a very, very warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. I'm your host, MC Dharna, and once again, I would like to extend a very warm welcome to all the dignitaries, all the ambassadors and high commissions, all the audience members, each and everyone who has joined us for this extravagant event. Let's start this day with a huge round of applause for all of you, ladies and gentlemen. मैं निवेदन करूंगा आईसीसीआर के महानिदेशक श्री कुमार तुहिन जी से माननीय मंत्री महोदय को लेकर दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि मंत्री महोदय की अगवानी करें, उन्हें एस्कॉर्ट करके मंच तक लेकर आएं दीप प्रज्वलन के लिए। Ladies and gentlemen, it is the day, now is the time when we request our dignitaries to please step forward for the auspicious lamp lighting ceremony. We request our dignitaries to light the ceremonial lamp and get this day started. We seek the blessings of Lord to move from darkness to light, from ignorance to knowledge, and from agony to happiness. तो मंच पर माननीय मंत्री महोदय का शुभागमन हुआ है। हमारे महानिदेशक श्री कुमार तुहिन जी, अंजू जी, हमारी डीडीजी आईसीसीआर, वे मंच पर पधारे हैं दीप प्रज्वलन के लिए। और दीप प्रज्वलन के माध्यम से प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति का ये सुंदर रंग आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारी इतनी सुंदर ट्रेडिशन है, इतनी बेहतरीन एक परंपरा है जहां दीप प्रज्वलन के यानी लैंप लाइटिंग के माध्यम से हम सभी के कल्याण की, सभी की वेलबींग की कामना करते हैं। दिव्य सज्जनों, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार है, बल्कि भारत और दुनिया के उन तमाम देशों के बीच एक कॉमन लिंक है जहां जहां रामायण की परंपराएं जो हैं वो फलती फूलती रही हैं। भले ही उनमें आस्था और विश्वास का रंग अलग हो, लेकिन प्रभु राम के प्रति आस्था वैसी ही है। आईसीसीआर इसी कॉमन लिंक को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन कर रहा है। इस क्रम में ये इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेला का 7वां एडिशन है और आईसीसीआर इस वर्ष 24 को ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण के रूप में भी मना रहा है। Yes, ladies and gentlemen, this is the 7th edition, 7th grand edition, and ICCR has decided to celebrate it as the year of connecting world through Ramayana. This is the theme for this year. The ceremonial lamp has been lighted, and we now request our dignitaries to have a curatorial walk. Our dignitaries have lighted the ceremonial lamp and they have officially inaugurated the 7th edition of India International Ramayana Mela 2024. And we are so blessed and delighted to have dignitaries here with us. We are also blessed to have artists from more than 7 countries here with us who will be performing throughout the next 4 days. And this is the year when we celebrate Ramayana Mela throughout the entire year. दिव्य सज्जनों, इस रामायण मेले में परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से प्रभु राम के जीवन और उनके उन प्रेरणादायक प्रसंगों की प्रस्तुति तो आपके सामने होगी। 7 देशों के हमारी टीम्स यहाँ आई हुई हैं, लेकिन और बहुत कुछ है जो हमारे आर्ट और ट्रेडिशन का हिस्सा होते हुए प्रभु राम के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति करता है। वो एग्जीबिशंस के माध्यम से हमारे यहाँ पर स्टॉल्स में प्रदर्शित की गई ट्रेडिशंस हैं। माननीय मंत्री महोदय, महानिदेशक महोदय उन्हें लेकर एक क्यूरेटोरियल वॉक के लिए जाएंगे ताकि एग्जीबिशंस का भी अवलोकन हो सके और उन एग्जीबिशंस में, स्टॉल्स में वो परंपराएं कितनी सुंदर ढंग से सदियों से अभिव्यक्त होती रही हैं, उसका रंग भी वहाँ पर आपके सामने है। We are here not just for the Ramayana Mela. This is not just a Mela. This is a celebration of the traditions of Ramayana. That's the traditions that link us through all walks of life. And we are so blessed to have each one of you here with us. We have artists performing from 7 countries for the next 4 days here with us. तो अब मैं निवेदन करूंगा
आईसीसीआर के महानिदेशक महोदय से कुमार तोहिन जी से कि वो आए, माननीय मंत्री महोदया का आप सभी का वेलकम करें। स्वागत संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा कुमार तोहिन जी से। Ladies and gentlemen, let's welcome Shri Kumar Tuhin, DG ICCR, for his welcome address. Let's welcome him with a huge round of applause. माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपस्थित राजदूत और उच्च आयुक्त, विशिष्ट अतिथिगण, मित्रों, देवी और सज्जनों, आप में से प्रत्येक को नमस्ते और शुभ प्रभात। मैं आज अत्यंत खुशी और गौरव की भावना के साथ आपके सामने 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है और सदियों से ज्ञान, करुणा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा है और हमें नैतिक मार्गदर्शन भी करता आया है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल भारत के लोगों के दिलों में बसती है, बल्कि इसने दुनिया भर के कई देशों और लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। कलात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में रामायण प्रेरणा का स्रोत रही है, जिसने भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में साहित्य, नृत्य, संगीत और दृश्य कला के उत्कृष्ट रूपों को जन्म दिया है। प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता की इन कहानियों ने कवियों, चित्रकारों और कलाकारों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है, उनकी विचार प्रक्रिया और सामाजिक सोच, दर्शन और चेतना को प्रभावित किया है। आज जब हम 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमें एक बार फिर से इन शिक्षाओं की सार्वभौमिकता और साथ साथ विश्व पटल पर मानवता पर इनके स्थायी प्रभाव को याद करने का समय भी है। मुझे बहुत खुशी है कि कोविड महामारी कारण कुछ वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इस वर्ष फिर से रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मुझे इसका भी अपार हर्ष है कि वर्ष 2024 को आईसीसीआर द्वारा रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ने का वर्ष, दैट इज़ ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण ट्रेडिशन, के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए आईसीसीआर की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान, सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियां और विजिटर्स प्रोग्राम के तहत वर्ष 2024 के दौरान रामायण के थीम पर प्राथमिकता देने का ही विचार है। इस वर्ष का मेला न केवल दिल्ली में आयोजित होगा, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय संस्थानों और लोगों की भागीदारी के साथ करने की योजना है और इस मेले का शुभारंभ अभी हो रहा है, पर इस साल के अंत तक हर महीने में कुछ न कुछ कार्यक्रम और गतिविधियां चलती रहेंगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हमेशा से विभिन्न देशों के कलाकारों और विद्वानों को एक साथ लाने और बाहर के देशों में हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए काम करती आई है। इस वर्ष यह काम रामायण की मुख्य थीम के अंदर करने की योजना है। मैं उन सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से सभी विदेशी कलाकार जो विदेश से आए हैं और अपने प्रदर्शन से जो इन सारे देशों में रामायण के विविध रूपों में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पाता है और किस तरह से रामायण हम देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है, उसे उजागर करने का काम करेंगे। अपना हार्दिक आभार देता हूँ। मैं उन सभी राज्य सरकारों का भी जो इन विदेशी कलाकारों को अपने यहाँ बुलाने और वहाँ पर रामायण मेला के अंदर कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग कर रहे हैं, अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। I would also like to convey my sincere appreciation and thanks to all the ambassadors and high commissioners who are present here today and who are working with us in bringing their cultural troops to India for participating in this festival. मैं इस अवसर पर हमारी माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सदैव ही हमारा नेतृत्व किया और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में, इस स्तर तक पहुँचाने में हमारी मदद की। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में इस वर्ष का 7वां
अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव न केवल हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्धि को प्रदर्शित करेगा, बल्कि भाग लेने वाले सभी देशों के बीच मित्रता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बंधन को भी मजबूत करेगा। आइए, आज जब हम माननीय मंत्री के इस महोत्सव का उद्घाटन करने के अवसर पर उपस्थित हैं, उस अवसर पर रामायण के कालजयी छंदों के माध्यम से बुने गए एकता के धागों का भी जश्न मनाएं और सीमाओं के पार विभिन्न देशों के दिलों और दिमागों के ताने बाने को जोड़ने वाले इन धागे का भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय महानिदेशक आईसीसीआर कुमार तुहिन जी का। Ladies and gentlemen, we would now request our Honorable Chief Guest, Srimati Meenakshi Lekhi ji, along with DG ICCR Kumar Tuhin ji, to please have a curatorial walk. उसके पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी जी से कि उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिले, उनकी शुभकामनाएं मिले। शुभ संदेश के लिए निवेदन करता हूं मीनाक्षी लेखी जी माननीय मंत्री महोदया से कि वो मंच पर आएं। आपकी तालियों के साथ हम उन्हें मंच पर इनवाइट करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदया। Ladies and gentlemen, let's welcome her with a huge round of applause, our chief guest for the day, Srimati Meenakshi Lekhi, Minister of State for External Affairs and Culture. We are so fortunate to have her presence here amongst us. Thank you very much, Ambassador Kumar Tuhin, Anjuji, Ambassador Anju, who's the deputy here with ICCR, Excellencies, ladies and gentlemen. Pleasure and honor being here and especially inaugurating this festival called Ramayana, the 7th edition, is to showcase to everyone the values which Indian society possesses. Many a times people would wonder, how is it that Indians conduct their business in a certain way and can be identified across? I must say that in spite of the challenges which history and the time threw on us, the resilience of the people, the faith of the people is something which is to be respected, and especially the patience of the people. And that patience comes from an epic like Ramayana, which is history for us. And that history which repeatedly tells us that path of righteousness is not needed because you are selfish, because you want things for yourself, but because you have the capacity to work for others in spite of challenges, not because circumstances are in your favor. And ultimate truth will prevail. Ultimately, the good will prevail over evil. And the message, this particular message, becomes so relevant and it is timeless, because the battle between the good and the evil is a constant thing. So Satyug, which we label as a few thousand years ago, this happened, the war, the battle between the good and the evil, the demons and the gods happened. Subsequently, the other time frame comes, and again, that time frame sees the same thing, the battle between the good and the evil, the prosperity, the wellness in society, the morally and ethically correct society needs to be preserved and protected. And that act of preservation and conservation of a morally, ethically correct society comes with a lot of sacrifice. Somebody needs to make that sacrifice and rise above selfishness. That's the message of this entire epic. That in spite of personal difficulties of all kinds, in spite of personal sacrifices, somebody continues to work for the well-being of the society at large and continuously living in despair, living in difficulties, and yet not straying away from the path of righteous conduct. And the beauty, especially when I'm speaking amongst our friends from our friendly nations and making it a global audience, I must say that one must understand how Ramayana is so deeply ingrained in the whole of this region. And it comes from the fact that we are culturally very similar people. And maybe
if the DNA gets to be tested, we are very similar people genetically also. And for centuries we've lived together. There are upheavals, the historical upheavals, times have changed, things have changed, altered, but we still have deeper value connected with each other. And that gets to be represented. There is say for example, Indonesia. So Indonesia, you'll find symbols or say evidence like wayang kulit, which is a puppet form, leather puppet form, where they exhibit various stories from Ramayana. Prambram is another temple complex in Java, which represents the Trinity, the Lord Shiva, Brahma, and Vishnu, the Trinity, which gets to be represented by our gods, and that value system continues. Borobudur also represents a similar complex, and these are UNESCO sites as well. Malaysia has a presentation, and that presentation also takes place, and you'll see that though historically the religions change, society changed, but the deeper value system within the family, within the society continues to be the same. We have Sri Lanka. Sri Lanka very much is part of abduction of Sita, the royal kingdom of Ravan, and Kandy, where they take out a procession called Esla Pereira, which is basically the tooth, the mortal remain of Bhagwan Buddha. The tooth of Bhagwan Buddha is what they carry it in a procession, and it's a celebration of a sort. Then we have Ashok Vatika, where Sita was captured and kept. We have Adam's Peak, and various other places which are completely relatable to Ramayana. And the story of Ramayana continues. The footsteps can be actually judged, and one can actually understand. Cambodia has Angkor Wat, one of the best sites, one of the best architectural wonder, I can say, which Government of India through its ASI wing has also been working upon. Thailand, the name itself is Ramkin, and Thailand has such beautiful, deep cultural connectivity with India that in dresses, in the textiles, the paintings, the gods and goddesses, we are very akin to each other. And Ramkin also mentions Ayodhya, which is Ayodhya in our language. We call it Ayodhya or Ayodhya. And Ayodhya, if you go and see the murals, the paintings on the walls, which is the ancient capital town of Thailand. And that itself represents the connection with Ayodhya, the connection with Ramayana. Mauritius, I must mention all these countries where Indian diaspora lives. I still call it Indian diaspora, though they are very different countries today. Guyana, Mauritius, Suriname, all these countries where not way back, but in, say, 19th century or 20th century, cartload or shipload of people were transported from India by the imperialist powers of that period. And I look at them, what they carried with themselves? In that moment of desperation, they carried Ramcharitmanas with them. And I wonder about them, I seriously wonder about them, that 100+ years have gone past. And the faith, look at the faith of these people who were enslaved actually, because slavery got finished in Europe. And at that point in time, these people were taken in as so-called endangered labor. And this indentured labor signed some agreements. So we call them Girmitia because they couldn't pronounce agreement.
They would call it Girmitia. This Girmitia community, where families got divided, husband in one field, wife working in another, the child in the third. And at a point in time when we were forced to grow indigo, not getting the right price for growing indigo, so they could not sustain themselves. It was unsustainable agriculture. They could not even grow wheat and rice for themselves. And with that background, they were taken out of this country. You know what sustained them? And they did not become terrorists. They did not start killing people. They did not go on a wrong track. Ramcharitramanas. Their faith in Lord Ram that one day the right will prevail over wrong. And after a wait of 100+ years, the right did prevail over the wrong, and they became free nations in their own right, and they continued to tread the path of righteousness. And it just doesn't stop me from being amazed at the resilience, at the faith, and the value which Ramcharitramanas has for this community. And that is why Ramayana, in terms of faith, the moral, ethically correct behavior becomes so relevant that how a king should conduct his or her business, how important it is for the wife to bring up the children right, how important it is that wife who's the princess herself, when questioned, chooses to go to Valmiki ashram rather than go to her own parental home where she was a princess. She could have gone with her other brother-in-laws and others who were kings and princes in their own right, but to establish the right value to the society and giving them the message that this is who we are and this is what Raghupati's family is all about, and the value system it sustains. I must say, righteousness, truth, duty, and that's what triumphs. And thus, Ramayana continues to remain very relevant. No matter which time period we look at, the story keeps repeating itself in various parts, in various forms, and the resilience of the people who remain true to their faith, no matter whether they were shot, they were killed, they were sticks and brutalization happened. But with all that as well, they remained true to the faith, and in a peaceful manner, they continued to ask for what is right. And after 550+ years and otherwise 700+ years, Ram gets a temple for itself is a big deal for all the ones who have faith and belief in the rightful conduct. And that's what this moment represents. The triumph of good over evil. Ultimately, the good will prevail. And those who are causing atrocities and pain in the society will not be remembered. What will be remembered is the name of Ram, because it's the ideal which gets worshipped, not the evil. They may be victorious temporarily, but what gets to be reminded is the value that society needs to possess. And even internationally, I mean, I've just described so many other countries. I got to see one presentation in some of the European countries also, where the theater groups have produced their own Ramayana, and they wanted to perform. I'll have a conversation with our DG subsequently. Maybe we can have those groups as well to perform, and several other groups who will be seeking the performance of Ramayana in their country. So we could send the groups as well. But thank you, friends, for being here, carrying the message of Ram in our hearts, doing whatever best describes India and Indian value system, and describing that how easily Indians become part of the society in which they adopt to live, and in a correct way, not in a wrong way, but in a right way, right methodology, right way of living. And I usually say it's like a bowl of salad. They mix very well, they taste very good, but you can identify. You can pick
this is a tomato and this is a cucumber. The fact is that you can pick that this person's an Indian, but you also know the person will conduct his or her business the way that society demands and expects in a right manner, in a correct manner. And the value system comes from Ramayana, which is an ultimate story for all of us. And many other several parts of our, I call it branches, because we are all coming from the same source. So Buddhism, Jainism, everything has deeper connection with the same value system. And that gets to be exhibited once you start exploring the history. And because they are multi-layered history, officially 5,000-6,000 year old history, unofficially 10,000, 12,000 year old history. I mean, so there are going to be layers over layers over layers, but the source of Ramayana continues to be Valmiki Ramayana. That is considered to be the first literature through which we find the historical evidence, and there are multiple Ramayans, and of course each country has their own version, but wish you the best. Inauguration ceremony is just a formality to send out the message, but behind your cards is the schedule. I would expect all of you to keep coming back in between whenever you have time, or keep sending people who enjoy the performances, because evening 5 to 7 is the time when we are having the visual performances, dance, music, art, festivity, ballets, and I'm sure everybody is going to enjoy it. Just to give you a little insight, today we have Ram ki Shakti Puja. So Ram worshipped the goddess before entering Lanka, because he had no army, he had no support from anywhere. But yet he does the Shakti Puja. He worships to the goddess and seeks her blessings. And most of these characters get to be played by men, usually, including Sita's character gets to be played sometimes by men. Now, this is a cultural thing. Our society changed, so did the values change. But this particular Ram Ki Shakti Puja, the character of Ram, the character of Lakshman, and the character of Hanuman also gets to be played by female artists. And these female artists come from Banaras. So that's the beginning, that's the today. And we are going to end, because most of the discussion in Ramayana is from various perspectives. But the last day, the 21st performance, is Sita Uvach, which is how Sita interprets the whole of Ramayana, what Sita has to say and speak about Ramayana. So I would request, these two are highlights. Of course, in between we have Thailand, we have Laopedia, we have Malaysia, Singapore, Indonesia. All of them are going to be performing various scenes and various sequences from the stories from the Ramayana. So look forward to seeing you again and again. But I think the faith and resilience is something which personally I admire a lot, and sending a message of friendship to everyone, that all my friends who have chosen to come this morning, a hearty welcome to all of you. You've really showcased what it means to be together, what it means to be together for the right values and the right ideals. Thank you very much. And Ram is an ideal. Thank you. We would like to thank Honorable Minister for her wonderful words. It is under her guidance and with her vision that Ramayana Mela has upscaled itself by leaps and bounds year after year. She very beautifully deliberated that no matter what time we are in, Ramayana will always and always be relevant. And this Ramayana Mela is a beautiful source of cultural exchange. It is a celebration of Ramayana tradition and values, and it is our celebration of faith and beliefs. देवी सज्जनों, आज के इस इनॉग्रल सेशन में 2 परफॉर्मेंसेस आपके सामने हम रखेंगे। अग्निहोत्री बंधु, अवध प्रांत और अवध की वो धरा जहां अयोध्या स्थित है, पावन धाम अयोध्या,
उसी अवध क्षेत्र से लखनऊ से पधारे हैं अग्निहोत्री बंधु। उसके बाद इंडोनेशिया के कलाकार आपके सामने राज्याभिषेक का, जो भगवान श्री राम जब लंका से वापस आते हैं उनका राज्याभिषेक होता है, वो प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। छोटी सी एक झलक आप देख पाएंगे। लेकिन पहली प्रस्तुति अग्निहोत्री बंधुओं की। राकेश अग्निहोत्री और देवेश अग्निहोत्री, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों में अग्निहोत्री बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति गायन की जो परंपरा है उसमें अपनी स्वर वंदना के माध्यम से नई ऊंचाई दी है, नए आयाम दिए हैं, उसे एक नई शिखर तक पहुंचाया है। मंच पर आ चुके हैं, एक बार आपके करतल ध्वनि के साथ उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप दोनों के गायन में भाव और आस्था की अभिव्यक्ति को बहुत आपने प्रमुखता से रखा है और उसकी जो भक्त की शुद्धता है, उस शुद्ध माहौल और भाव में उसकी प्रस्तुति आप करते हैं। वैसे ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि आपका स्वर्गीय माता पिता दोनों ही आपके संगीत और कला के साधक थे। माँ श्रीमती चंद्रकांति और पिता श्री ब्रजनारायण अग्निहोत्री जी से भाइयों को जहाँ भक्ति और संगीत की प्रेरणा मिली, वहीं गुरुदेव श्री विनोद चैटर्जी जी ने इनकी प्रतिभा को निखारा है। लगभग 1985 से शुरू हुई इस भक्ति संगीत यात्रा में आप 500 से भी अधिक मौलिक भजनों का योगदान दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सहित बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। पहला दिल्ली में ही पहला इंटरनेशनल भजन समारोह हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व करने का आपको अवसर और सौभाग्य मिला था। इसके अलावा आईसीसीआर के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों में आपने अपने भक्ति गायन की प्रस्तुति दी है। तो ये हम सब के लिए एक सुखद अवसर होगा। प्रभु राम की वंदना और उनके प्रति आस्था की भाव की अभिव्यक्ति में संगीत, शब्द और भाव की त्रिवेणी में हम सब गोते लगाएंगे। तो अग्निहोत्री बंधुओं के साथ आज की इस प्रस्तुति में जो संगीत कलाकार हैं, तबले पर प्रतीक समद्दर जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ढोलक पर प्रकट सिंह परिहार और दूसरे ढोलक पर रवि कुमार, कीबोर्ड और सिंथेसाइजर विजय सैनी, साइड इफेक्ट पर कृष्ण मोहन कुमार। तो अग्निहोत्री बंधु और सभी संगीत कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का जो बालकांड है, उसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है, जिसमें उस मंगलाचरण में हमारे अपने आराध्य की आराधना और भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। उसी के साथ आइए हम डुबकी लगाते हैं इस प्रस्तुति में, क्योंकि शुरुआत अग्निहोत्री बंधु उसी बालकांड के मंगलाचरण से करने जा रहे हैं, जिसमें संगीत, शब्द और भाव की त्रिवेणी है। हम सब जिसमें डूबेंगे और उसकी रसानुभूति करेंगे। Ladies and gentlemen, we have amongst us Agnihotri Bandhu, who are here from Tehzeeb ka Shahr, Lucknow, and they are here all set to perform. So ladies and gentlemen, presenting to you a beautiful, mesmerizing performance by Agnihotri Bandhu. Let's welcome them with a huge round of applause, and it's over to them. धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित माननीय मीनाक्षी लेखी जी को हम दोनों भाइयों का सादर वंदन। आईसीसीआर के सभी उच्चाधिकारियों और संपूर्ण आईसीसीआर परिवार, मीडिया पर्सन्स, जितने भी विशिष्ट अतिथिगण यहाँ हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन। इस पावन अवसर पर, जैसा इसका नाम ही है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, तो रामायण मेले का शुभारंभ मानस से करना हमारे विचार से अधिक प्रासंगिक होगा। और इसी भावना से मानस बालकांड के एक प्रसंगानुसार, जब ये पृथ्वी असुरों के दमन से, उनके अत्याचार से पीड़ित थी, तब इस पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर समस्त देवताओं सहित क्षीर सागर में विराजमान विष्णु भगवान से यह विनती की कि हे प्रभु, अब आपको अवतरित होना पड़ेगा, क्योंकि असुरों के अत्याचारों से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, सब असंतुलित हो गया है। संत जनों के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने यह घोषणा की कि मैं शीघ्र ही दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरा पर अवतरित हो जाऊंगा। उसी प्रसंग से आज की ये प्रस्तुति का शुभारंभ। और चूंकि ये रामायण मेला है, इसलिए रामचरितमानस
बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और सभी प्रकार का मंगल करने वाली माँ सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिव जी और माँ पार्वती की भी मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इस मंगल विचार के साथ और मंगल ध्वनि के साथ शुभारंभ।
जा कहूँ